you have to no worries, okay? And then the most important thing is for your cabin crew interview is your appearance, is your English, is your confidence level. Because when you become a cabin crew, then definitely a lot of people will ask a lot of question from you, not related to any kind of other thing, but related to your flight, related to which they want in flight. So you have to know about the English very well, and you have to be a confident candidate to express whatever you want to in front of passengers, in front of any guest which who are traveling with us. Yeah. So please be confident while in interview, and please be good in grooming. Do your makeup very nicely. Then definitely they will hire you. Yeah, my makeup was very nice. I already uploaded one video on that. Like my makeup was very good on my interview date, because I have done my makeup from the makeup artist. That day I was not that much of confident about my makeup, so I appointed one girl, and that girl did my makeup, and I like that was amazing makeup on my face. But when I got selected, then I have learned some makeup, and now I'm doing my makeup by myself, and I don't need anyone to give some instructions for me for my makeup. Yeah. So first of all, if you want to become a cabin crew, please be confident, not only in interview, on in flight as well. Yeah. And after some flights, if you already got selected after some like right now you feel like I don't have much confidence on that, so after some flight you will definitely confident. Yeah, okay. And apart from that, disadvantages of cabin crew, which I wanted to upload this video, because uh, you will not uh, company will not give you that base which you are like your home base. A lot of people are homesickness person. Yeah. So if you have a homesickness type of banda ya ladki, sorry, if you have that type of person, then बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल बाहर रहना. Because you have to take your responsibility totally, okay? No one is helping you, like जब आप बाहर रहोगे, no one, okay? You have to take your whole responsibility, खाना सब कुछ, ठीक है? तो जैसे मैं दिल्ली से हूँ, बट मेरा बेस अब दिल्ली नहीं है, मैं कहीं और हूँ, ठीक है? तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो अपने आप को ये चीज़ बता देना. फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर सकते हो. ओके, you don't have much time to spend with your family, like festivals, a lot of things. Company will give you some holidays, but not really company will gives you. Yeah. If you really want to earn, then I don't think so you want to go home and then spend some time with your family. Yeah, once in a year you have to go and then spend time, but not really. Okay, because you are here for only the work. After that, second disadvantage is you don't have schedule on a daily basis. Like कोई schedule ही नहीं है. Like right now you are in, let's suppose right now um, I'm in Dubai, okay, and after some time I have a flight. So when I reach in India, then the time is totally different, okay. And I'm living as a Dubai base. Like मेरे को अभी लगेगा कि मैं दुबई में हूँ और मैं पहुँच गई वहाँ, तो नींद आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, a lot of health issues, a lot of issues are related to your health, like बहुत कुछ है, ठीक है. तो वो सेकेंड डिसएडवांटेजेस है कि आपको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है. लाइक आपकी फ़्लाइट अभी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, और आपको लग रहा है मैं जागूँ सोऊँ क्या करूँ मुझे नहीं पता. या बहुत सिर दर्द होता है, बहुत हेडेक होता है,
ठीक है, तो ये सेकंड डिसएडवांटेज है। बट या इफ़ यू आर enjoying your life, if you really want to enjoy your life or travel, food, people, new people, best job. Okay, for that people, best job, because hotels are very nice, बहुत अच्छे यार, everything is very nice. Like passengers is also very nice sometimes, बहुत अच्छे ऐसे भी होता है, ठीक है। तो लाइक होम सिकनेस पर्सन इज अ मेजर डिसएडवांटेजेस। आपको टाइम नहीं मिलने वाला, आपको घर में बात करने का भी थोड़ा टाइम बाद ऐसा लगेगा कि टाइम ही नहीं है, बात कब कर। हो जाती है बात, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अगर आपको बात करनी है देन यू टॉक, नो वन इज स्टॉपिंग यू, ठीक है। और दैट्स इट। If you have any doubt, then please let me know. I will upload that video on that topic. But please wait for me for my for my videos, because I have a lot of work to do. I have a lot of study to do. बहुत कुछ है मेरे पास। And अच्छा, थर्ड, जो लोग अकेले नहीं रह पाते हैं, या लाइक मी, बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को, मेरे जैसे लोगों को बहुत दिक्कत। जैसे मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे कोई ना कोई चाहिए। मैं आई एम टॉकेटिव या सो मुझे कोई ना कोई चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं। और घर पे भी मैं ऐसी ही थी, मतलब फैमिली के अंदर रहने वाली, मजाक मस्ती। एंड व्हेन यू आर लिविंग एज एन एयर होस्टेस, देन यू हैव टू लिव अलोन, ठीक है। अलोन मीन्स अलोन, ऐसा नहीं है कि आपको लाइक रूम ही अकेला मिलता है ना। कैबिन क्रू को होटल में भी रूम अकेला मिलता है, ठीक है। और आप होम पे अपने बेस पे जिसके साथ मर्जी रहना चाहो, लाइक योर बैचमेट्स, योर क्लासमेट, योर ट्रेनिंग पार्टनर्स, आई डोंट नो, बट आप रह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोस्ट ऑफ टाइम you are alone, because every time the crew who are operating with you is new. Every flight might be there, some are you already know, some are totally new. Like for me, every crew is new. For right now, every crew, I haven't known anyone till now, so every crew is new for me. Okay, this is third disadvantages. Till now I felt this only. लाइक न्यू ईयर आने वाला है, आई डोंट नो कि मैं कहाँ होंगी। क्रिसमस पे आई हैव अ फ्लाइट, सो थैंक गॉड, बिकॉज आई डोंट वांट टू लिव अलोन। आई लव टू डू फ्लाइट्स, आई लव टू डू वर्क, लाइक बहुत अच्छा लगता है मुझे एज अ क्रू भी, और एज अ UPSC एस्पिरेंट भी। आई एम अ UPSC एस्पिरेंट एंड and like I'm preparing for UPSC because of I have a dream to be an IAS officer as well, yeah. But I love to do my work. Seriously, cabin crew is a fabulous job for those who love to travel, who love to eat food, who love to stay in hotels, and okay, this is a highest paid job, yeah, we all know. So if you have any other doubt, comment down. I will definitely upload one video on that topic. और यार देखो, एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा आता है कि हमको वेन्यू नहीं आ रहा, ठीक है, सॉरी। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि यार हमने अप्लाई किया फॉर एनी इंटरव्यू और वेन्यू की मतलब आ नहीं रहा है, वेन्यू रिलेटेड वो नहीं आ रहा है हमारे पास, पूरा वेन्यू का जो एड्रेस है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। देन अप्लाई अगेन, ओके। आप उसी लिंक पे जाइए, अप्लाई कीजिए, दे विल सेंड यू द होल एड्रेस,
ठीक है, आप किसी से मत पूछिए वो एड्रेस को, बिकॉज हमको नहीं पता, या किसी को भी नहीं पता कि कहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं, कहाँ कैसे हो रहे हैं। एंड आई एम नॉट इन दिल्ली नाउ, आई एम नॉट इवन इन इंडिया राइट नाउ। सो मतलब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं यही बोलती हूँ कि प्लीज़ अप्लाई अगेन। तो बस आप किसी से हेल्प मत लो, आप अप्लाई करो, खुद अप्लाई करो। यू हैव टू नो, बिकॉज यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ नाउ। यू आर नॉट अ किड। या अगर आप किसी से पूछोगे और कोई आपको गलत बता दे, फिर क्या करोगे आप? या आपको खुद को पता होना चाहिए कि वट आई एम ट्राइंग टू डू। ठीक है, तो प्लीज़, मुझे नहीं पता है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और any other question, like what they ask in interview? I have a lot of questions, I already made a note, but I don't have time to upload that videos, uh, but I will try. Okay, thank you, bye bye.